एक साल का इंतजार हो चुका है फाइनली खत्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं eISL सीजन 2 ब्रॉट टू यू बाय नॉटविन गेमिंग। और इस साल काफी सारे चेंजेस है। इस बार हमारे कास्टर्स लिस्ट पे भी थोड़ा बहुत चेंज है। मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्सियत जिसने पैदा होने के बाद ही डायपर जब से पहना तब से फुटबॉल को फॉलो किया है। मेसी के सबसे बड़े फैन है। जी हाँ, स्वागत कीजिए टीटी का। कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फिक्सेस क्योंकि ईआईएसएल सीजन 1 जब मैंने देखा था उस टाइम पे मैंने देखा था कि हर एक का प्लेयर कुछ अलग लेके आता है गेम के अंदर। उनके स्टैट्स बात की जाए या फिर उनका जो जुनून है वो सब कुछ अलग अलग है। एंड इस बार तो वो चेंज भी हुआ है। तो कोई कोई प्लेयर ऐसे भी रहेंगे जो अपने पिछले सीजन के क्लब के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। सो बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ईआईएसएल सीजन 2। जी हाँ, 11 क्लब्स यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं और compete भी कर रही है। 30 लाख के वो प्राइस पूल का और एक्स्ट्रा भी हमने प्राइस मनी डाल रखा है उस प्लेयर के लिए जो सबसे ज्यादा गोल्स यहाँ पे करने वाला है। बट उस सब के बारे में बात तो करेंगे। पहले नजर डाल देते हैं फॉर्मेट के तरफ। इस बार का जो सिलसिला है वो किस प्रकार रहने वाला है। हम शुरुआत कर रहे हैं हम लीग स्टेजेस के साथ। 28 फरवरी से लेके 26 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाला है ये पूरा कार्यक्रम। और यहाँ पे जैसे हमने बोला था 11 क्लब हैं और हर क्लब में 2 प्लेयर्स हैं, तो 55 मैचेस होने वाले हैं और हर जो मैच में 3 गेम्स रहेंगे। गेम्स के बारे में भी बात करेंगे, फिर आ जाएगा प्लेऑफ्स की टीम। बिल्कुल प्लेऑफ्स चलने वाले हैं 6 टू 14 मई तक। एंड 6 क्लब्स क्वालिफाई करने वाले लीग स्टेज से प्लेऑफ्स पे। एंड जिस पे 12 प्लेयर्स रहेंगे। एंड जो हमारा होने वाला है प्लेन सिट्स एफजीएस, उस पे जो जीतेंगे मैंने मेनली ये जो सीजन 2 जो जीतने वाले हैं उनको खेलने के लिए मौका मिलेगा फीफा ई वर्ल्ड कप 2023। सो ये एक बहुत बहुत बड़ा स्टेज होने वाला है। तो हर एक का क्लब के पास इधर मौका है कि वो इस सीट को ले एंड उसी के साथ जाके रिप्रेजेंट करे इंडिया को और अपने क्लब को भी। तो पिछली बार थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़े से कलेश हो रखे थे क्योंकि ये 1v1 करा दिया था। इस बार 2 स्लॉट्स है और इस बार जी एफजीएस में दोनों को ही खेलने का मौका मिलेगा। बट चलिए यहाँ पे नजर डालते एक बार प्राइस पूल के तरफ की। जीतने वाले क्लब को कितने यहाँ पे धनराशि प्राप्त होगी। और जो प्रथम आने वाले फर्स्ट पोजीशन 4,50,000 रुपए मिलने वाले हैं। द्वितीय पायदान पे आप अगर हैं तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे और तीसरे और चौथे पायदान को 75,000 ईच मिलेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमने कहा है, जो भी प्लेयर सबसे ज्यादा गोल करेंगे, जो एमवीपी रहेंगे, उनको अलग से एक प्राइज मनी रहेगा। उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। बट इस बार वापस से बता दें दोस्तों, ये जो पूरा टूर्नामेंट है यहाँ पे प्लेस्टेशन 5 पे खेला जाने वाला है। फीफा 23 होगा। तो जब नेक्स्ट जेन कंसोल्स की बात आ जाती है तो सारे प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसी की आई थिंक इंतजार थी, इसी की दरकार थी हमें। बट चलिए आज एक बारी नजर डालते हैं कि आज कौन कौन से टीम्स हिस्सा लेने वाले हैं। एक बारी नजर डालते हैं स्केड्यूल और हमारे मैचअप्स की तरफ भी। बिल्कुल, आज का जो पहला मैच है ये मैच होने वाला है पिछले साल के फाइनल का। तो इस बार अगर हम लोग बात करते हैं सीजन 2 की तो पहले ही मैच पे हम लोग को पिछले साल का जो फाइनल है वो देखने के लिए मिलेगा एक बार फिर से। चेन्नई एफसी वर्सेस होने वाला है मुंबई सिटी एफसी के बीच में फर्स्ट गेम। देन मैच नंबर 2 होने वाला है बेंगलुरु एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बीच में। एंड जो आखिरी मैच है वो होने जा रहा है ईस्ट बंगाल एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी के बीच में। ईस्ट बंगाल एफसी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। एंड तो बहुत बहुत ज्यादा कहने की मजा आएगा आज तीनों के तीनों गेम्स देखने में। एंड वो बात कह रहे थे ना कि दिवाली के टाइम पे जो मजा आता है वो मजा आज के शुरुआती मैच पे आने वाला है क्योंकि पिछले साल के फाइनलिस्ट है। जी हाँ, दोनों ही टीम्स। इनफैक्ट जो पहला मैचअप होने वाला है जैसे टीटी ने कहा है, आई थिंक दिवाली इज राइट हियर टुडे इटसेल्फ। क्योंकि चेन्नई एफसी और मुंबई सिटी एफसी, आप बात कर रहे हैं ईआईएसएल सीजन 1 के 2 फाइनलिस्ट जो थे, उन दोनों टीम्स के साथ हमारा पहला ही यहाँ पे इनागुरेशन मैच होने वाला है। और प्लेयर्स के ऊपर भी नजर डाल देते हैं। हमारे किंग जिसके सर पे यहाँ पे ताज है, नवीन खेलने वाले हैं गेम नंबर 1 बनाम उनके ओपोनेंट जो होंगे वो रहेंगे सैकी। अगर गेम 2 की बात करें तो यहाँ पे जो नवीन के टीममेट है जो कि पिछले बार मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेल रहे थे, ही इज गोना बी जॉइनिंग इन अ कोऑप मैचअप अगेंस्ट सैकी एंड जिप्पी पंपकिन। जिप्पी पंपकिन अगर आप सोच रहे कौन है, ही इज आदित्य चड्डा। पहले क्रशर के नाम से जाने माने जाते हैं, अब नाम थोड़ा चेंज कर लिया, बट आई एम प्रीटी श्योर जो खुखारपन हमें पिछली बार जब दूसरे टूर्नामेंट्स में देखने को मिला था, इस बार पहली बार
एआईएसएल में अपना डेब्यू कर रहे हैं मुंबई सिटी एफसी के दोनों एथलीट्स, तो मुझे तो मजा आने वाला है। टीटी, आपके क्या विचार है? बिल्कुल एंड उनको कहीं न कहीं शायद बाकी के टूर्नामेंट्स में तो प्लेयर्स देखे होंगे, लेकिन इस बार जो है वो ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर जब पहली बार आ रही है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पार्क या फिर कुछ अलग से तैयारी करके आए होंगे। सो वो चीज़ देखना बहुत एक्साइटमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए इस सीजन की जो शुरुआत है उससे ही हम लोगों को बहुत कुछ जो चेंजेस है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। Yeah, DT, but let's not delay any further and directly head into the game because it has already begun. And right now we've got Naveen in white representing Chennaiyin FC, the champion coming back to hold on to his throne. But now we have him going up against P Pumpkin from Mumbai City FC. Now that is going to be really interesting. And as we can see, the game has already begun. As, Aditya Chadda, he wanted to create an attack just from that right wing, but seems like it did not work out as Naveen was very careful. हाँ एंड नाल्डिनियो लेफ्ट विंग से इधर बनाते हुए एक मौका विद थियो, बट लेट्स गलीड टू बेलिंगम, लायनल मेसी रन निकाल चुके हैं। ओह, वैन डाइक की तरफ से बेहतरीन इंटरसेप्शन एंड वी कैन सी लाइक जिस तरीके से इधर फॉर्मेशन बिल्ड किया गया है विद 3 डिफेंडर्स मोस्ट प्रोबेबली, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से अभी के लिए जो लोअर ऑर्डर है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। Yeah, absolutely. I mean, you talk about the players that they have opted for are pretty much the best in game, right? For every single position, you're going to expect all the icon players, the team of the year players, and Saki again trying to press in that attack, goes for a cutback with Messi trying to dribble through the defense, but Naveen just being extra careful over here and ensuring that he saves the day. But there you go, he's right now on the counter attack, and I think TT, we are gonna witness most of same players playing repeatedly, with the same picks, and Ruud Gullit, he's gonna be there in every single club. Yeah, for sure. जिस तरीके के स्टैट्स उनके पास मौजूद है, he can do wonders. But बेलिंगम राइट विंग एंड इधर पे भी बात किया जाए उनको भी बहुत ज़्यादा पिक किया जा सकता है। यूजुअली अगर देखा जाए तो एम्बापे अभी इस पूरे इंटायर फीफा 23 के अंदर बेस्ट स्ट्राइकर एज वेल एज विंगर भी हम लोग कह सकते हैं, जिस तरीके से परफॉर्म कराया जा सकता है, एंड इसी वजह से शायद इतना ज़्यादा महंगा भी है उनका कार्ड। Yeah, I mean, right now things are looking really interesting. This time he's changed his direction of attack with Neymar just trying to perform some skill moves over there. But Naveen, just being the quality of a player he is, right? If you try to describe Naveen as a player, very calm, very composed, just waits patiently for his attack. A beautiful lob, and there you go. Try to go for a shot. Very rarely you see R9 missing that shot. Maybe had he gone for a time finish, things could have been otherwise. But that was a beautiful lob through pass, and he just could not capitalize on that. बट ही कैन शूट विथ आउटफुट एज वेल, बट इधर हुआ नहीं था वो चीज़। मेसी लेफ्ट विंग पे ऑलरेडी इधर रन निकाल रहे थे, बट वो मौका नहीं मिला है। गलीत मिड साइड, और आप देख सकते हो पूरा साइड टू साइड गेम इधर चलता हुआ, एंड इधर दोनों ही टीम्स विथ उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे अपनी टीम को। सो इसी वजह से कोशिश यही है कि वो मिडिल से ही खेले, बट विंग से अगर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे चेन्नई एफसी, सो उनके लिए आई थिंक ज़्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी की अगर बात किया जाए तो उनकी तरफ से हम लोग एकदम सेंट्रल पोजीशन पे 5 से 6 प्लेयर्स देखने के लिए मिले जो खेल भी नहीं थे। Yeah, exactly. I mean, they're just waiting for that one crucial moment to pass, right? And this time, of course, Naveen did try to build up that attack on that right wing, but realized that Saki had hit him like a book and had to capitalize on that. And in the meanwhile, Saki deciding to go for that attack, but right now Naveen again on his counter, a run through that left wing, might just go in for the cross, or could just give a pass back and try to restabilize the attack and just wait for that one crucial opportunistic moment. He gives that pass maybe to Mbappe or towards R9 and directly takes this shot. And look at this, Saki is not failing for it, but oh, there you go. Last moment, tried to enter it, Virgil van Dijk.
precise and clinical as ever. Oh, Khalid, oh my God! Lionel Messi with the shot, but बेहतरीन goalkeeping. Mbappe to Ronaldo and 1-2 काफी अच्छा हो रहा है चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए प्रेशर पूरा बिल्डअप है शूट एंडोसी के साथ पहला गोल आता हुआ चेन्नई एफसी की तरफ से 1-0 के साथ आगे बढ़ जाएंगे एंड उनको थोड़ा देख के खेलने की जरूरत क्योंकि कोई भी ये गैप को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकता है Yeah, and this is exactly what we were talking about, right? Naveen showing his composure and calmness in that final third, right? He knew all he had to do was just provide one beautiful pass, an instant change of direction, just goes in for that shot, and you know how good that R9 is. I'm pretty sure, considering you have got an unlocked account, could be that prime R9, so did not have a lot of issues with the shooting chances. And now Saki has to find something, some way to get inside the game, because if this goes on, I'm pretty sure Naveen going with that player lock at this point would want to pass it on towards Mbappe, but refuses to do so because he got a little offside over there. देखिए फिर से एक बार बनता हुआ अटैक और चेन्नई एफसी मौका नहीं दे रही इधर टीम मुंबई सिटी एफसी को क्लब मुंबई सिटी एफसी को एंड कोशिश यही करना होगा कि बॉल को रोके बट मिडिल साइड से देखिए विंग से एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है विंग पे अगर बॉल नहीं खिलाएंगे फिर मुश्किल है हकीमी ऑलरेडी रन निकाल चुके थे बट बेलिंगम उनको ढूंढ नहीं पाए गलित जो बीच में सैकी की अगर बात किया जाए उनको पासिंग ऑप्शंस उतने ज्यादा नहीं मिल रहे थे इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लिया एंड राइट हैंड साइड पे बेलिंगम मौजूद थे ऑन बॉल Really getting exciting. Maybe once again looking for that cutback. This time decides to go towards Bellingham. Could be a goal, and there you go. Messi, that twist and turn, and Saki, just when we were anticipating when he's gonna strike, he delivers, and now we are back at one each apiece. We play like a team of the year Messi. You have pace, you have shoot, सब कुछ आपके पास है एंड उसका ही प्रॉपर फायदा इधर मिला उनको फर्स्ट हाफ हो चुका है खत्म एंड फर्स्ट हाफ के अंत पे 1-1 चेन्नई एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी अभी के लिए तो कहीं ना कहीं सेम पोजीशन पे चल रहे हैं बट रिप्लेस की अगर बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट इधर ये था रोनाल्डो का शूट एंड उसी के साथ हम लोगों को गोल भी देखने के लिए मिला एंड इधर देखिए लायनल मेसी अभी कह सकते हैं कि यस इस बार फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड वो जीते हैं तो उनको तो इधर कार्ड यूज करना ही था Yeah, of course. I mean, against Virgil van Dijk, I really felt in that moment because he also just recently won that award for being one of the best defenders. And I really felt Naveen would have forced a tackle out there the moment the ball was coming onto Messi because the marking should have been there. But as we discussed the stats, the possession is pretty much close for both these teams, and the game has been pretty intense, right? It was just Naveen who went with 2 extra shots, but Saki just being clinical as ever ensured that no matter how many shots he goes for, he has to convert that, and he did. So there have been 2 styles of play in particular. We've seen Saki a lot relying on attacking through the wings and then trying to deliver that cutback. And Naveen needs to understand that. But for Naveen, we have seen a variety of attacks. We've seen him try to play box to box sometimes, trying to utilize his fullbacks, even his wingers, and making them in play. But now we are on with the second half, and right now we've got Mumbai City FC again on the attack, and right now, this could be really close this time. However, somehow Naveen trying to defend and will really succeed in doing so. कॉर्नर मिलता हुआ एंड मेसी क्लोज जरूर गए थे हेडर बट वैन डे सार उनको हिलने के लिए जरूरत ही नहीं हुआ क्योंकि बॉल था ही नहीं ऑन टारगेट चेन्नई एफसी की अगर बात किया जाए तो चेन्नई एफसी की तरफ से हम लोगों को बहुत शानदार पासिंग एक्यूरेसी देखने के लिए मिल रहा है दैट्स व्हाई इतना ज़्यादा प्रेशर वो क्रिएट कर पा रहे थे पहले हाफ पे बट बात कर रहे थे जिस विंग एक्सप्लॉइशन की वो अभी फिलहाल के लिए करने की कोशिश थियो हर्नांडेज तो बेलिंगम देखिए बीच में इस बार बेलिंगम एंड कलीद
फ्रॉम द साइड ऑफ मुंबई सिटी एफसी। बहुत ज़्यादा अटैकिंग मूड में कोशिश किया जा रहा है कि वो इधर टैकल करे, बट लियोनेल मेसी अटैकिंग थर्ड पे एंट्री ले जरूर चुके थे, बट हकीमी की तरफ से एक इंटरसेप्शन आया। एंड डिफेंस प्लेयर मिलिटाओ एंड वैन डाइक हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि अभी के लिए तो तो बेस्ट डिफेंडर इस पूरे FIFA 23 के अंदर। I just could not figure out what Saki was really up to over there. But regardless, a beautiful, step over by Messi over there, and then he tried to do the, ball roll. But Saki was alert, and we've seen, of course, through the entire tournament, we're going to see a lot of few tweaks being made, and this time, of course, Saki has gone in for the 2 TOTY cards, and for now, you know, and you've got Bellingham TOTY, and we know how good of a defensive midfielder card that is, right? Really overpriced. I did try my luck in unlocking one, but apparently Ade Zima was one of the lucky ones who managed to get a Virgil van Dijk. Nobody was pretty lucky to get it from back. I heard it got from 75 plus back, but regardless, they're getting back into the match. Now we've got Saki was trying to, of course, build up an attack, but Naveen, he's not trying to open a lot of corners, right? He's just remaining very calm, very precise in exactly knowing what to do. And, the passing lanes have been also pretty, tight for him. He's making sure he does not make a lot of mistakes, but this could have been. And there you see Maldini just being present to intercept that. And now, so again, we've got Naveen back on the attack. एंड लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सारा प्लेयर्स हम लोगों को दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए राइट विंग को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है एज ऑफ नाउ, बट कोशिश करना होगा कि वो दोनों ही साइड को, पूरे ग्राउंड को इस्तेमाल करिए, क्योंकि अगर आप पूरे ग्राउंड को इस्तेमाल करेंगे तो ओपोनेंट को भी समझने में थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगता है। बट आप सेम एरिया से अगर आप बार बार अटैक करेंगे फिर थोड़ा बहुत ईजी हो जाता है इस पूरे सिचुएशन को संभालना। एज ऑफ नाउ मुंबई सिटी एफसी डिफेंस के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखते हुए, बट 1-2 करते करते अटैक पे जा रहे हैं। मेसी की तरफ से थ्रू बॉल जरूर खिलाया गया, हकीमी रन डाल सकते हैं, बट देखिए इधर उतना मौका नहीं दिया जा रहा। सो एक चीज तो है कि दोनों ही टीम्स जो है वो सिमिलर से इसी वजह से है क्योंकि टीम ऑफ द ईयर जो कार्ड्स है वो अभी कोई भी कार्ड मैच नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ टीम ऑफ द ईयर आइकन्स छोड़ के। दैट्स व्हाई आई थिंक इतने ज्यादा टीम ऑफ द ईयर कार्ड्स का इस्तेमाल होता हुआ। मेसी अल्टीनी की तरफ से बेहतरीन इंटरसेप्शन, इसके थ्रू इस बार के लिए तो जो डेंजरस सिचुएशन था वो टल चुका है। Of course, I do see there Juan Christopher Nkunku, and we know how good that Road to Glory, in fact the Path to Glory card was, and beautiful striker, has that 5-star skill move and 5-star weak foot, could really capitalize on that. But at this point, Naveen is just trying to be patient again. Nothing really has changed for him, being ever so tight. And look at that pause that has been queued by Saki for quite a long time. Needs to get some fresh legs because now TT, we are reaching the final 10 minutes of the game. This is a moment where somebody needs to find a winner. एंड एक भी गोल ओपोनेंट टीम के लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकता है। सो कोशिश यही करना होगा कि आप डिफेंसिवली बहुत स्ट्रांग रहे एंड विद दैट आपको गोल्स भी इधर को स्कोर करने की जरूरत है। नाल्डिनियो लेफ्ट से रन निकल जरूर रहा था, बट नहीं ढूंढ पाए पास। लीड टू बेलिंगम, डायरेक्टली एम्बापे बनाने की कोशिश। चेन्नई एफसी एक बार फिर से अटैक पे जाते हुए, रोनाल्डो मौका बना रहे थे बट वो हो नहीं पाया। शूट के पहले मिलिटाओ। एंड आप देख सकते हो कि मुंबई सिटी एफसी अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेम विद चेन्नई एफसी, बार बार अटैक किए जा रहे हैं। Yeah, I really felt, with that R9 roulette that he performed over there, that should have been, the angle was a slight off. Had he done that right in front of him, and he could have just passed through and could have taken a shot, because then you could use your R2 and get that little extra boost and could have gone in for that shot. And a lot of people might just have that little ickling in your mind where, whenever you perform a skill move and then you perform, then you go for that dash, you get that extra little added pace, and somehow your shots also do connect. And mostly we have seen the professional players, relying heavily going for the time finish. But we haven't seen, the time finish really being played over here by either of them.
एंड दैट्स व्हाई आई थिंक शुरुआती में थोड़ा शूटिंग एक्यूरेसी जो था वो कम देखने के लिए मिला था, बट या आखिरी मिनट था एंड उसी के साथ फर्स्ट मैच होता हुआ इधर खत्म एंड वन ईच के साथ ये गेम खत्म हो चुका है। चेन्नई एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी बहुत ज्यादा शानदार गया जरूर, लेकिन जिस तरीके से हम लोग को ये मैच आगे बढ़ता हुआ देखा, एक चीज तो पता चल रहा था कि अटैकिंग साइड के ऊपर चेन्नई एफसी के जो प्रदर्शन थे वो काफी अच्छे थे एंड बैक टू बैक अटैक जो है वो बन रहा था, बट मुंबई सिटी एफसी उतने मौके नहीं बना पाए एंड वो उधर उतना खास शॉट्स भी नहीं ले पाए थे। हालांकि उनका जो शॉट एक्यूरेसी था वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिला था एंड मैच की अगर बात किया जाए फुल सैमरी की, सो 1-1 होता हुआ दिखा पहले मैच में, बट जो नेक्स्ट मैच है वो होने जा रहा है को-ऑप, जिसपे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा चेन्नई एफसी की तरफ से नवीन एंड टिकट ऑन द हैंड हम लोग को सैकी एंड जिपी पंपकिन परफॉर्म करते हुए देखेंगे। सो फिक्सेस, व्हाट डू यू थिंक क्या होने वाला है? Oh, this is going to be so very exciting, to be honest, because Tikka down. Let's talk about this man. He was in Mumbai City FC the last season. This season, he has Hmm. decided to go for a swap, and he's rather played to the qualifiers and joined Chennaiyin FC. So the two finalists, in fact, now playing together as a team against a team of debutants, where you've got Saki and Zippy Pumpkin. You know, we discussed about these two, the veterans of the FIFA community, and of course, due to some or the other reasons, they kind of missed out on eISL season one. But this time, they ensured that they were here and are, of course, repping the blue colors of Mumbai City FC. It's going to be one hell of a matchup. Now, TT, we are venturing into a co-op matchup where, you know, now coordination matters the most. Now, Hmm. of course, Saki and Aditya Chadda, they have been playing with each other for quite some time. But I am rather, you know, curious to see how, you know, Naveen and Tikka have developed that synergy between them, because it has to be about somebody, you know, delivering the ball, somebody, you know, doing those trick moves and shooting. Because I have to tell you, Tikka is one of the most clinical finishers that we did get to see in the eISL season one. Every time this man gets into that final third, every shot he takes is a goal. वाह! सो आई थिंक ईएसएल सीजन 2 उनके लिए और भी ज़्यादा बेहतर रह सकता है, बट विद दैट पिछले सीजन पे जितने भी परफॉर्मेंस आया था उससे कहीं न कहीं जो है ओपोनेंट टीम भी थोड़ा बहुत देख के आए होंगे एंड उसके बीच में भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स एक साथ खेले भी होंगे लाइक एक दूसरे का ओपोनेंट पे। सो उसपे भी उनको थोड़ा बहुत तो पता चला ही होगा कि क्या स्टैट्स आते हैं, फिर फॉर्मेशन किस तरीके से खेलते हैं, क्या मिडल से खेलते हैं या फिर विंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोगों को दिखेगा। जैसे कि आपने भी कहा कि इधर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी कि कोऑर्डिनेशन किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच की अगर बात किया जाए 1-1 तो हुआ, बट आई Yeah. थिंक अटैकिंग साइड विद मोरल विक्ट्री चेन्नई एफसी के पास हल्का फुल्का रहेगा एंड ये उनका होम मैच भी है। सो चेन्नई एफसी की अगर बात करें तो उनका ये अटैकिंग पॉस्चर को अगर रोका जा सके तो मुझे लगता है कि इधर मुंबई सिटी एफसी के लिए बहुत सारे रास्ते और खुलेंगे गोल्स के। Yeah, but you know, let's take a look at the highlights, right? The first goal, a beautiful chance being created for Naveen, who kind of whiffed that shot, would pretty much not be happy about it. And we have seen Naveen, you know, time and again going for those lob through passes, right? I felt, you know, there could have been instances where he could have gone for that driven lob through pass, you know, the L1, R1, and then the through. But he did not opt for that. But one thing for sure, TT, that we can both agree on, that both of the defenses from either of these teams, after you know, just barring that one little slip up, they were really tight. And I always believe that if you have a good defense, then you are a good player. You just have to look for that one mistake, one little slip up, and capitalize. And that being said, ladies and gentlemen, let's not wait any further, right? Because game number 2, from what I hear from the voice in my head, says is almost ready. So let's just head in and find out in the first co-op matchup of the eISL season 2 who is turning out to be victorious. Because now, as things are in the home ground of Chennaiyin FC, they have managed all but a draw against Mumbai City FC. जी हाँ, एंड इस बार को-ऑप का मैच है एंड को-ऑप के अंदर इधर देखना होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। हालांकि अगर देखा जाए पिछले मैच को भी शायद दोनों ही टीम्स के जो दूसरे प्लेयर हैं वो ज़रूर देखे होंगे।
तो उसके थ्रू इधर आगे अभी देखते हैं कि इस मैच के अंदर क्या परफॉर्मेंस आएगा। हालांकि जैसे कि डिफेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे कि डिफेंसेस के अंदर टीम ऑफ द ईयर कार्ड के जो डिफेंसिव अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा है, तो इसकी वजह से इधर पोजीशन चेंजेस उनके बीच में जो होता भी है वो बहुत कोऑर्डिनेटली होता है एंड विद दैट पेस भी बहुत बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस भी जाते हो तो वो डिफेंस आके लाइक उनके पेस की वजह से जो है उसको एक बार फिर से आप रिकैप्चर कर सकते हो लाइक बॉल को एंड Yeah. आप उधर इजीली डिफेंस कर सकते हो। बट उसके ऑपोजिट पे आई थिंक अटैकिंग में भी टीम ऑफ द ईयर कार्ड्स है एंड रोनाल्डो है It's सो all broken. या But TT, back a little bit when I saw the Van Dijk and Eder Militao pair, because usually we get to see Lucio being played a lot, but it of course comes down to player preferences, right? Again, Lucio being one of the best centre backs that we had for quite a long time, and then we have seen a lot of players. Maybe some go for the TOTY honorable mentions, Koulibaly. We've seen a lot of that also happening. But regardless, I think one thing for sure we're gonna see Mbappe, I feel, is a cheat code to the game, and the TOTY Mbappe is pretty much cracked. If he already wasn't, if the gold card wasn't already better, and there were few small fallacies to that gold Mbappe, but with that TOTY one, I don't see anything happening. But even with the FIFA 23 really coming into play, since this version, we know how OP the Travella shots are, and I was kind of surprised none of these players went for one. आई थिंक उनको मौका ही नहीं मिला क्योंकि जिस तरीके से इधर पोजीशन कैप्चर किया जा रहा था आपको उतना स्पेस ही नहीं मिला कि वो शॉट्स ले पाए, तो इसी वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो अभी तक तो नहीं दिखा बट आई थिंक हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस मैच के अंदर, क्योंकि कोऑप पे कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब दो प्लेयर खेलते हैं तो आपके कंट्रोल में सब कुछ नहीं रहता, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत जगह ज़रूर बनता हुआ दिखेगा एंड उसमें हम लोगों को स्किल मूव्स भी दिखेंगे जिसके थ्रू वो गोल स्कोर करके जा सकते हैं। बट जैसे कि बात कर रहे थे एम्बापे की टीम ऑफ द ईयर कार्ड्स की, कभी कभार तो वो अवेलेबल भी नहीं होते क्योंकि सब परचेज कर लिए होते हैं या फिर जो है कोई सेल ही नहीं करना चाहता क्योंकि बेस्ट कार्ड है यानी कि इस पूरे फीफा 23 के अंदर अटैकिंग सेगमेंट की अगर बात किया जाए तो ऑब्वियसली एम्बापे जो है वो कोई छोड़ना ही नहीं चाहते पहली बात तो, और अगर थोड़ा बहुत मिल भी जाता है वो 10 मिलियन के आसपास सेल होता हुआ दिखता है मेरे लिए तो लाइक मैं अगर खेल रहा होता तो मेरे लिए तो बहुत दूर की बात है। सो या बहुत बहुत शानदार कार्ड्स एंड मेनली इधर कहना चाहूंगा कि रोनाल्डिनियो का जो यूज हम लोगों को देखने के लिए मिला वो हम लोगों को बैक टू बैक देखने के लिए मिल रहा था, ज्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं किया गया टैकिंग साइड पे अगर देखा जाए। Yeah, I mean, usually you get to see Ronaldinho in much in that cam position, right? And this time we were seeing Ronaldinho making a lot of runs through the wings. And in fact, Ronaldinho being one of the most rarest and most expensive cards, the latest TOTY icon Ronaldinho, and even the Rude Hullet one, two of the most pricey cards that we have out in the market, and since you have everything at your disposal, why not use it? And the players are doing exactly that. And even I was kind of expecting to see maybe Yaya Toure for the holding defensive midfielder position, but both these teams I think have somewhere settled down, and both the players in fact have certainly settled down at just opting for Bellingham, which again in my opinion was one of the good cards, and it was high time that clubs started to use that, and now players are also doing so. As a result of that, it did happen. So again, for all the viewers out there, we will be starting off with the co-op matchup in just a wee while, which gives us enough time to discuss more about what really happened in that first game. We could see Naveen trying to be a little bit more crafty with his attacks, being a little bit more patient, but I felt Saki was more relying on those counter attacks right through those wings, and that one goal that he managed to get was through that cutback pass, and then with Messi. And TT, I'm rather surprised or rather amused, or you can say baffled, as in why you've not talked about the Messi TOTY card yet. या लाइक मेसी टीम ऑफ द ईयर कार्ड्स की अगर बात किया जाए मेनली तो ये कार्ड लाजवाब है क्योंकि जब भी मैं मेसी के बारे में बात करता हूँ तो मैं कभी कभार बह जाता हूँ। सो इसी वजह से मैं अभी तक बात नहीं कर रहा था, बट विथ मेसी आपको वो ड्रिबलिंग जो मिलता है
एंड उसी के साथ पेस जो कि मिसिंग था गोल्ड कार्ड के ऊपर, अगर हम लोग बात करें, वो इसको इंक्रीज किया गया। सो आप विंग पे भी रन निकाल सकते हो, मिडिल से भी रन निकाल सकते हो, एंड आप दूर से ट्रेवेला भी मार सकते हो, क्योंकि शूटिंग पावर अलग लेवल का है एंड शूटिंग एक्यूरेसी भी। सो सब मिला के अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड ऑब्वियसली। एंड अगर बेस्ट कार्ड नहीं है तो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, आई थिंक मेरे लिए तो वो बेस्ट कार्ड है। सो बहुत ज्यादा इसी वजह से शायद यूज भी किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसके पहले अगर मेटा की बात करते हैं तो हम लोग को राइट पे गरिंचा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा था, एंड उसी के साथ साथ हम लोगों को जॉर्जिनियो भी बहुत ज्यादा यूज होते हुए दिखे थे। लेकिन इस बार मेसी के टीम ऑफ द ईयर कार्ड, आई थिंक रेटिंग वाइज पेले के बाद यही कार्ड है जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेटिंग कार्ड है। सो इसी वजह से इधर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्यों यूज हो रहा है, एंड लाइक क्या क्या बेहतरीन चीज है। वो तो और भी ज्यादा टूर्नामेंट चलता रहेगा और हम लोगों को भी और चीज दिखते रहेंगे। Yeah, in fact, now that you bought Garincha and Jairzinho up, we also did not get to see Ginola. One of those you can one of those players you can use in multiple positions. Also, sometimes you've seen in that striker position, sometimes through that left mid position. But regardless, having that, so a lot of these players rather rely on having the 5-star weak foot and the 5-star skill moves. And in fact, this time we did see Christopher Nkunku in action. And this card has been used by a lot of the pro athletes outside the country. So I'm pretty sure all these players have been looking forward to them, their formations also. And we know FIFA 23 is a game where it's heavily meta dominated. So every time there's a new update, there comes those new cards. And this time, another thing that we have to mention was in that very first game, we did not get to see a lot of substitutions in play. I mean, Saki did try to cue a pause, but till the moment the ball got out of play, the game was pretty much over. The final whistle was blown. Yeah, and I was expecting कि हम लोग को ऑनरेबल मेंशन विनीशियस जूनियर दिख सकता है लेफ्ट विंग के ऊपर, बट अभी शायद उनको टाइम नहीं मिला होगा या फिर जो है यूज करने की जरूरत नहीं हुआ। बट आई थिंक विनीशियस जूनियर भी हम लोगों को दिख सकता है लेफ्ट विंग पे स्पेशली, क्योंकि इसके पहले नेमार का भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन इस सीजन पे अगर हम लोग बात करें FIFA 23 पे, Neymar today. The Centurion Neymar. Centurion Neymar. सो लेफ्ट विंग पे नेमार जो है वो इस बार के लिए तो मौजूद नहीं है। दैट्स व्हाई आई थिंक विनीशियस जूनियर लेफ्ट विंग के ऊपर यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ रोनाल्डिनियो में भी। एंड रोनाल्डिनियो के बाद अगर कोई पेस में मैच कर पाए तो विनीशियस ऑब्वियसली वो रहने वाले हैं। Yeah, of course. And for all the new viewers who are relatively new to the realms of FIFA 23, who are wondering, what is a Centurion card, what is a Team of the Year card, what's an Icon card, let me tell you, every time, mostly, it's every few weeks, EA does release a few varieties of cards, and these are called as the promo cards, where you've got a gold base version of a player, and then there are certain players, the older players that we have, they are listed as icon cards, and then you've got 3 variants of them, their baby version, their mid version, and their prime version, and everybody has different attributes, different stats. For a few, maybe you've got their prime version, maybe with a slightly lesser pace, could get that 5-star weak foot, but their baby version having maybe more pace, and it all comes down to the preference of how you really want to play and play through around, right? And there have been also variety of playing styles, right? Like if we summarize, there are few players who love to play box to box and build up their attack, and then we've got few players who love playing from the wings, also utilizing their fullbacks, ensuring you've got to give all those instructions, those roles. And these are all some beginner tips for all the new FIFA enthusiasts who have just tuned in to this stream. And from prima facie look of it, FIFA 23 might look very simple, 22 players just going after a ball. Whoever scores a goal and has the higher number of goals eventually wins the match. But when you talk about the nuances inside a game, that is where things, I think, TT gets very, very complex. Sometimes feels like a game of chess. One wrong move and you're done. एंड ये चीजें तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप एक भी गलत पास देते हो एंड उधर से ही ओपोनेंट का जो अटैक है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है और वो आप खत्म कर सकते हो, एंड ऑफ लूजिंग दैट गेम
क्योंकि कभी-कभार वो एक गोल भी आपको उधर इक्वलाइज़ करने में बहुत टाइम लग जाते हैं, क्योंकि ऑपोज़िट जो प्लेयर खेल रहे हैं आपके सामने, उनका भी एक प्रॉपर डिफेंस है, उनका भी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है। सो वो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पढ़ लिया हो लाइक द ओपन बुक कि आप क्या कर रहे हो या फिर कौन से साइड से अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल। सो वो अगर एक बार आपको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आपका भी अटैक करना बहुत टफ हो जाता है। इसी वजह से गेम जितना हम लोगों को एंड टू एंड दिखता है या फिर जितना डायरेक्ट दिखता है, उतना डायरेक्ट है नहीं। एंड ये कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि कुछ देर पहले फिक्सेस कही थे कि इधर हर एक कार्ड का अलग-अलग अपना खासियत रहता है। एंड इस टाइम पे अगर फीफा 23 की बात किया जाए, तो एक टाइम था जिस टाइम पे हम लोग सिर्फ रेटिंग देख के यूज़ करते थे कार्ड, कि जिसका रेटिंग सबसे ज़्यादा होगा ओवरऑल पे, उनको हम लोग यूज़ कर लेंगे। लेकिन फीफा 23 वैसा नहीं है। फीफा 23 के अंदर आपको रेटिंग के अंदर भी बहुत होता है, लेकिन इस बार जो फीफा 2 है, वो आने जा रहे हैं हमारे सामने। एंड फिक्सर्स हम लोग को इस बार कहने की बहुत तो पता चलेगा कि कौन से क्लब इधर लीड में रहेंगे या फिर सिमिलर पोजीशन पे रहेंगे इस मैच के बाद। All right, now there's a little bit of a confusion over here with the jerseys. So, for the ones who are watching Chennaiyin FC, they're in that darker version of blue, the ones that's really bright, and the boys from Mumbai City FC, well, that little lighter hue. And right now, from left to right, it is Chennaiyin FC. But look at that, Mumbai City FC not trying to delay any further, get right into the attack, went in for that long pass. But the defense for CFC, that was really on point. Yeah, now with Sipi Pumpkin and Saki अटैकिंग मूव बनाते हुए फिलहाल के लिए अगर देखा जाए शुरुआत से मुंबई सिटी एफसी बहुत शानदार मूव बना रही है। देखिए रोनाल्डिन्हो थोड़ा ज्यादा होल्ड करके बॉल को, दैट्स व्हाई इधर अटैक नहीं बन पाया। एम्बापे मौका बनाने की कोशिश, बट फिक्सर्स आई थिंक आप एक बार एक चीज जो है वो जरूर देख पा रहे होंगे कि इधर पासिंग उतने नहीं हो रहे थर्ड अटैकिंग थर्ड में जाके, जिसके थ्रू जो अटैक से गोल भी हो सकता था, वो हम लोगों को थोड़ा कम चांस बनता हुआ दिख रहा है पहले ही 10 मिनट के अंदर। Oh, but there you go. At least, Mumbai City FC, they've been looking really attacking right from the very start. Again, that step over coming with from Mbappe through that right wing would be looking past. There you go towards Ronaldo, R9 maybe, but decided to go for Messi instead, just changing the direction of attack. A beautiful ball roll into that net, and there you have it. Chennaiyin FC get that breakthrough. And I'm telling you, there is no second thoughts about it. It has to be Karman Tikka. This was a typical Karman Tikka goal. बिल्कुल, what a shot! Oh, अटैक ज्यादा कर रहे थे मुंबई सिटी एफसी, बट गोल कंसीड कर चुके हैं ऑलरेडी। इस बार लूसियो भी यूज किया जा रहा है, जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, आई नो, लूसियो के कार्ड को, एंड उनको भी लेके आया गया है। बट हकीमी, एक गलती होता है, रोनाल्डो विद द शॉट एंड इक्वलाइज करते हुए हकीमी से हुआ गलती, एंड उसका पूरा भुगतान अभी भरता हुआ चेन्नई एफसी। Oh yeah, that one little sliver of mistake, and this is what we were talking about, right? It's that one mistake that costs you, and suddenly Mumbai City FC, they're right back. And a little bit of a correction there, the goal scored by Karman Tikka, it was initially that beautiful roulette that was made by Karman Tikka, and just went in and then took that shot. But on the contrary, coming back to the goal that we just got to witness, that was nothing short of a beauty. Again, another mistake. No way. Both these teams are making mistakes, and every single one of them being capitalized. And this time again, nobody else than the R9 and Chennaiyin FC have taken the lead back again, TT. I mean, this is bizarre. This is the difference between previous match and the running match, कि पिछले मैच में एक ही प्लेयर कंट्रोल कर रहे थे और इस बार ये को-ऑप है। दैट्स व्हाई इधर कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता हुआ, एंड दोनों ही टीम्स इधर बहुत ज़्यादा गलतियां करते हुए। सो फ्रॉम द साइड ऑफ चेन्नई एफसी एक बार फिर से अटैक पे जाते हुए लेफ्ट विंग से जा रहे थे, बट इस बार मेसी, रोनाल्डो, बट हकीमी आखिरी मोमेंट इंटरसेप्शन के थ्रू
अपने क्लब को बचाएंगे। शुरुआती कुछ टाइम 2-1 का हो चुका है स्कोर लाइन। चेन्नई एफसी 1 गोल से आगे। एक और गोल अगर कंसीड कर लेते हैं मुंबई सिटी एफसी, फिर उनके लिए कमबैक करना बहुत टफ हो जाएगा। थियो हर्नांडिस बहुत ही ज्यादा अटैकिंग पोजीशन पे खेल रहे हैं एंड उनको लेफ्ट बैक पे आई थिंक ओवरलूप पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। दैट्स व्हाई हम लोग को इधर उस तरीके से अटैकिंग पोजीशन पे देखने के लिए मिल रहे हैं। Yeah, of course. I mean, I think it was that overlap, right? Run that Yeah. he tried to make over there. And, for now, we've seen end-to-end attacks, right? And this time a lot of goals are being scored. Imagine it was 25 minutes where we've already seen 3 goals already being made, and Maldini really comes to the rescue. We've seen, Maldini, sometimes few players like playing Maldini from that left back. We've also seen instances where Maldini is used as a centre back, but for now, Chennai FC again trying to build up on that attack. A little bit of a ball roll might give you that extra bit of a breathing space, find that extra room, which CFC did not opt for. Again, a driven through pass for the players of MCFC, but could not find that connection. And you've got to be very clinical and very precise on the timing of your shot, because if you mess that up, then of course the possession gets lost as MCFC is still trying to carry on with their attack. मुंबई सिटी एफसी पोजीशन रखते हुए एंड बेहतरीन बैकहिल के साथ जोर्जिनियो टू रोनाल्डिनियो एंड गोल। राइट साइड पे राइट नेट पे फिनिश करते हुए रोनाल्डिनियो के जो वो डांस है वो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एंड 2 ऑल हो चुका है, इक्वलाइज कर चुके एक बार फिर से मुंबई सिटी एफसी चेस करते हुए। एंड बात कर ही रहे थे कि सबसे ज्यादा रेयर कार्ड्स में से आते हैं रोनाल्डिनियो टीम ऑफ द ईयर कार्ड, टीम ऑफ द ईयर आइकन कार्ड, एंड उसका ही इस्तेमाल एंड हम लोग देख पा रहे हैं आउटकम। Yeah, I mean, of course, this had to be inevitable, right? Just making that very simple pass and takes that left-footed shot, making no mistake, and Mumbai City FC with that beautiful equalizer again, building up that attack. You could see that blistering pace coming in over there, and with Ronaldinho, you've got those plethora of skill moves that you can perform in that final third, get that little opening. But in that last goal, it was absolutely not necessary. Kept things simple as much as they could, and it really worked. This time, however, again trying to capitalize the wings, but now I think Chennai FC have realized that you need to keep those lanes blocked. थियो हर्नांडिस मेसी टू डायरेक्टली हर्नांडिस के पास दिया गया था, बट गलीत वर्सेस गलीत चलता हुआ बीचों बीच। फाइनली फर्स्ट हाफ होता हुआ खत्म। फर्स्ट हाफ के अंदर ही फिक्सेस हम लोगों को बहुत सारे अटैक्स देखने के लिए मिले। इधर आप देख सकते हैं कि शॉट एक्यूरेसी चेन्नई एफसी कितना शानदार है। दोनों ही टीम की तरफ से हम लोग को 100% देखने के लिए मिला था। एंड ये थे वो गोल्स जो कि बहुत ज्यादा शानदार, ये रूले के साथ जिस तरीके से एंट्री लिया गया था विद R9, ये परफॉर्म करना अपने आप में ही बहुत टफ होता है। एंड एक बार अगर कर लिया फिर उसके बाद गोल होने से कोई नहीं रोक पाता। Yeah, but look at how beautifully they've been using that Ronaldinho card, and being there at the right positions, making those right passes. But then we got all these defensive lapses. In fact, each from one of these teams, which eventually ended up. And look where the Virgil van Dijk was from Chennai FC. I do not know who was on that yellow trying to control that, but I'm pretty sure he could have done better in that situation, because he was left unmarked, and as a result of which had to concede a goal. But we are back again with the second half. This time Chennai FC looking really ferocious, because the ball still in their control. Mbappe passing on towards Pele, but goes out all for a corner. If they can make anything out of that. Pele again, one of those strikers being preferred by Chennai FC, but seems like was an offside. एंड उसी के थ्रू अटैक पूरा ही टूटता हुआ एंड फिर से एक बार बिल्डअप किया जाएगा मुंबई सिटी एफसी की तरफ से। जॉर्जिनियो बहुत ड्रॉप इन करके खेल रहे थे। बेलिंगम, गलीतू, रोनाल्डिनियो एंड
थियो हर्नांडिस, जैसे कि ओवरलैप पे हम लोग देख पा रहे थे कुछ देर पहले मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, वो चीज नहीं दिख रहा। शॉट लेने से पहले हकीमी का वो एक छोटा सा टच बहुत ज्यादा डिफरेंस के बाल बाल बचे। Yeah, absolutely. Just surviving by the whiskers over there, because I almost felt, my heart coming out of my mouth over there. One little mistake, and that could have made all that difference there. But regardless, Chennaiyin FC maintaining their attack, and this could have been a good one. But Lucio was there right to intercept that, and now MCFC on their counter attack. Maybe Mbappe might pass it on towards Jairzinho. Big question. Yeah, there you have it. Was on offside. Made the run a little quicker, a little faster over there, and the timing was completely off. And this is again where we bring you back, ladies and gentlemen, where it is a co-op matchup. So it's a 2v2, and synergy has to be there. And this is, of course, their first official game. So you could see those little jitters in both the teams or other clubs. Yeah, and बैक ऑफ द माइंड प्रेशर भी कहीं ना कहीं रहता ही है, क्योंकि आप जब पहले मैच खेलते हो पूरे eISL सीजन 2 ओपनिंग मैच खेलने जा रहे हो, जिधर आपके ही टीम जो है वो पिछले साल के फाइनल्स के लिए होते हैं, तो जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा रहता है आपके कंधों के ऊपर। एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इधर जो है वो प्रॉपरली निभाए जा रहे हैं दोनों ही टीम की तरफ से, क्योंकि अभी तक जो है पिछले मैच का भी रिजल्ट हम लोगों को ड्रॉ ही दिखा था। एंड इस मैच के अंदर भी टोल चलता हुआ, लेकिन इस बार के लिए थ्रू बॉल निकाला गया था पेले के लिए, लेकिन सही टाइम पे क्लियर किया गया गोलकीपर की तरफ से। Yeah, again a very near close chance. Chennaiyin FC definitely showing those signs of attack, and now Mumbai City FC. Oh, that little extra pass over there did not go for that right play, and had to pay the price for it. And for now, Chennaiyin FC, they were trying to make that pass on towards R9, but Bellingham was there to intercept it and made sure that it was MCFC's ball. Now in play again through Jairzinho. You get that beautiful pace coming in through, and just when we were wondering when we get to see the prime Jairzinho is in display, a good beautiful chance. He went for that little skill move, but did not really work, and I think was that reverse elastico that Ronaldinho opted for. Very difficult to perform, but this could be a promising chance. Goes in for the shot and delivers. R9 getting that goal, and now we have got MCFC back with the lead. Yes, क्या शानदार वो गोल स्कोर किया गया था। एंड उसी के साथ अगर देखा जाए मुंबई सिटी एफसी की तरफ से, तो मुंबई सिटी एफसी अभी तक चेस कर रहे थे गोल्स के मामले में, लेकिन इस बार लीड लिया है उन्होंने। सो एक बहुत ज्यादा लाजवाब कहीं ना कहीं कमबैक कह सकते हैं इस पूरे गेम के अंदर। एंड जितना ज्यादा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेशन भी मुंबई सिटी एफसी के प्लेयर्स के बीच में बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। Yeah, and not the kind of a hiatus that we were really expecting, and we would apologize to all our viewers, but do not worry, we're going to be right back into the game with whatever the remaining amount of time was, and we're going to ensure that everything is back to where it was. But as things stand, one thing we did get to witness, TT, in the beginning of the second half, Chennaiyin FC, they were looking really dangerous, really deadly with their attack, but there had been a few defensive lapses, but they did not concede a goal. That was the Mumbai City FC. But again, on the counter attacks, we've seen how strong they were. And again, that little defensive lapse being very much visible from the side of Chennaiyin FC, and was capitalized, and simply a pass towards R9, and it is 98% of those times R9 takes a shot in the final third, it goes right past the keeper, and the goal comes in. But any other takeaways that you had from this game so far? आई थिंक रोनाल्डिनियो का जो एक चांस बन रहा था उस एरिया पे, वर्जिल वैन डाइक का जो फिजिक है वो हम लोगों को देखने के लिए मिला। क्यों वैन डाइक को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, एंड क्यों हम लोग कहते हैं कि हो सकता है पूरे फीफा 23 के अंदर बेस्ट डिफेंडर कार्ड है वर्जिल वैन डाइक, क्योंकि उस टाइम पे रोनाल्डिनियो को जस्ट उन्होंने शील्ड करके रखा और पैर से बॉल को क्लियर किया। सो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड
स्पेशली अगर हम लोग इधर बात करते हैं पूरे फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन वाइज आई थिंक इधर मिड टू मिड गेम हम लोगों को ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से। बट उनके जो थियो हर्नांडेज है, उनको जिस तरीके से ओवरलैप पे भेजा जा रहा है और बार 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 अटैक पे शामिल हो रहे हैं, उसके थ्रू वो एक एक्स्ट्रा अटैकिंग या फिर एक्स्ट्रा पासिंग ऑप्शन उनको मिल रहा है अटैकिंग थर्ड पे, जिसके थ्रू उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज जरूर मिल रहा था। दैट्स व्हाई हम लोगों को इधर शुरुआत से थोड़े बहुत अटैक ज्यादा करते हुए दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद वी डोंट नो लाइक क्या हुआ, अचानक से मुंबई सिटी एफसी के टीम के अंदर पूरा ही मोमेंटम शिफ्ट हो गया एंड मुंबई सिटी एफसी वो अटैक करना चालू कर दिया और पूरा ही चेन्नई एफसी को पीछे ढकेल दिया। एंड अभी के लिए वो डिफेंस के ऊपर लो ब्लॉक पे खेल रहे काइंड ऑफ। एंड अगर हम लोग बात करते हैं मुंबई सिटी एफसी की, सो वो प्रॉपरली हाई लाइन बना के बार बार अटैक कर रहे, राइट टू लेफ्ट टू राइट, और बीच में से तो रोनाल्डो ब्राजीलियन ब्रिलियंस देखने के लिए मिल ही रहा है। Yeah, I mean, I think both these teams have utilized the Ronaldinho card really well, right? If you talk about its work rate has been pretty immense. Both of them making sure to get inside the final third. They've not been shying away from using all the skill moves. We've seen a lot of them, a variety in fact. We've seen those step overs, even we've seen a fake elastico just being made in that previous attack there. And quite difficult to perform sometimes. I mean, you can still go for a roulette, that's pretty much doable. The step overs are doable, but when you talk about those 5-star skill moves like the reverse elastico, when you talk about McGeady cancels and all, I don't think we've seen a McGeady cancel just yet. But I'm pretty sure when players like Charan Jot really come into play, who rely really heavy on those skill moves, we are going to see that in display also. Now, addressing that first claim you made, Virgil van Dijk, the team of the year card, and Virgil van Dijk, a very tall player, a very tall centre back, kind of cuts in your when you try to go in for those lobbed cross passes or the lobbed through passes. He's there to always intercept that. Again, having a very lean physique type, has that reach, and when you so there's this new thing in FIFA 23 when you're especially playing on those PS5 consoles, right? The lengthy style of acceleration. Yeah. Where players like Virgil van Dijk who are really tall, they can take larger strides, the longest strides over there, and in turn to catch up to really fast attackers, let's say like Mbappe or maybe the R9, they really come in handy. So you always want to keep defenders like Virgil van Dijk. I'm pretty sure, I think 90% of all these clubs, they are gonna have Virgil van Dijk in them. And for the second choice of a centre back, could be really optional. We have seen the Eder Militao's come in. Again, Eder Militao card being very, very OP this particular version of FIFA that we have, that is 23. And Lucio was the predominant one. But then later on, after the TOTY release, we've got a few changes here and there. But right now, ladies and gentlemen, the winners have been decided, and it is going to be going to Mumbai City FC. So finally, they're a point up over now. And Chennaiyin FC sadly could not get that equalizer. And now everything, the complete helm falls down on Tikka, because he has to win his game number 3. Otherwise, the defending champions are going to be starting with a loss. What a storyline would that be for tomorrow's papers? Yeah, for sure. And कोशिश तो करना ही होगा कर्मन टिक्का को कि वो इस मैच को बचाए, क्योंकि शुरुआत वाला ड्रॉ के साथ फिर जो ये लाइक कोऑप मैच भी था, उस पे भी लीड के साथ शुरुआत किए थे, बट बाद में जाके मुंबई सिटी एफसी का कमबैक हुआ। उसके बाद उन्होंने एक गोल मार के इधर मैच को जीत के भी गए। सो आई थिंक एक्शंस जो है उतने ज्यादा मिस नहीं हुए थे, क्योंकि गोल हम लोगों को दिखा था। एंड या जो नेक्स्ट मैच है वो पूरा हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा फॉर श्योर, जिस पे जैसे कि फिक्स ने कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है कि इधर कर्मन टिक्का इधर गोल स्कोर करे। एंड स्पेशली अगर बात किया जाए होम एंड अवे की, तो होम क्लब अभी फिलहाल के लिए हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है चेन्नई एफसी, एंड ऑफ द हैंड हम लोग को मुंबई सिटी एफसी अवे क्लब के हिसाब से दिख रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स वाई इधर जो जर्सीज है वो भी थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। लाइक जितने भी हमारे ऑडियंस जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो तो ऑलरेडी क्लियरिफाई किया ही गया था, फिक्सेस ने कर ही दिया था।
तो हम लोग एक बार फिर से गेम के अंदर जंप इन करेंगे बहुत जल्दी। बट फिक्सर्स, व्हाट डू यू थिंक, लाइक जिस तरीके से अभी तक गेम चला है एंड जो पहला गोल था कमन टिक्का के तरफ से, वो देखने के बाद आपको लग रहा है कि कमन टिक्का के पास हो सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा ज्यादा रह सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद से गोल स्कोर किया था पिछले मैच पे? See, of course. I mean, Karmantika, like I said, he's a lethal clinical finisher, right? You give him the ball and he has it. He knows exactly what he has got to do in that final third, inside the box, and he scores. And it's not just, doing those skill moves, right? He's got those long shots in his arsenal, which we're pretty much going to see in that 1v1 matchup against Aditya Chadda, or Zippy Pumpkin, what he likes to call himself these days. I do not know. I really preferred Crusher though. I mean, all the FIFA fans out there from the communities that you're watching, let us know what you prefer. Or who do you think? Again, a follow-up one. Who do you think is going to win that final matchup of the evening? Because it is going to be a banger. Because now we of course know it is Karmantika, one of the finalists of eISL Season 1, going up against a debutant, that is Aditya Chadda. But let's not forget the history, the legacy that Aditya Chadda brings. Because I remember, I of course won't name one of those tournaments. He had that underdog Cinderella story going on with him, TT. He went on to beat Charanjot and won that tournament. And everybody was baffled. But right now, we are back again with all the action over here. Chennaiyin FC in their home colors, that is blue, and then we've got Mumbai City FC in their away kit, just slightly a little dull version of blue. But now Zippy Pumpkin, he is on with his attack from that left wing, but was intercepted. शुरुआत की अगर बात किया जाए तो हम देख पाएंगे थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं, जरूर इधर स्लो डाउन करके खेलने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा पेस अभी के लिए तो चाहेंगे मुंबई सिटी एफसी, क्योंकि उनके पास प्रॉपर मोमेंटम है, दैट्स व्हाई। तो वो तो चाहेंगे इधर जल्दी जल्दी खेलने की। बात कर ही रहे थे, एक बार फिर से अटैक पे जाते हुए रोनाल्डिन्हो, बीच में एम्बापे, लेकिन वर्जिल वैन डाइक द शील्ड वो अभी भी मौजूद थे एंड उसी के थ्रू इंटरसेप्ट किया गया एंड इस बार के लिए तो क्लियर भी किया गया। Yeah, of course. I mean, right now, I think we've seen Aditya Chadda really utilizing a lot of options that he has. He's not been shying away from making those long passes, and all he needs to is connect. And there you talk about those overlapping runs coming in from Theo Hernandez, but now he's not there. And with Mbappe, you gotta get that pace, because right alongside him, you've got R9 already inside the box, giving that pass, needs to go for a little bit of a turn, and then for maybe a shoot, but went in for that ball roll. But the defense of Karman Tikka ensured that he went no further. देखिए इधर अटैकिंग पोजीशन पे एंड विथ इधर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुके हैं एज अ डिफेंसिव साइड, अगर बात किया जाए मुंबई सिटी एफसी की। सो बहुत शानदार तरीके से इधर विथ को मेंटेन करते हुए एज अ डिफेंसिव साइड, एंड डिफेंस जब वो कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करते हुए। बट जॉर्जिनियो के साथ राइट साइड पे थोड़े बहुत स्किल्स दिखाते हुए जरूर, बट वर्जिल वैन डाइक विथ लॉन्ग पास, थियो हर्नांडेज पास क्लीट इधर मौजूद थे क्योंकि उतने ज़्यादा पासिंग ऑप्शंस बचे नहीं थे। रोनाल्डो, जॉर्जिनियो, मौका बन सकता था लेकिन फेंस इधर कहीं नहीं दे रहे। डिफेंस को जब तक आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे तो सेकंड शॉट भी डिफ्लेक्ट हुआ, लाजवाब। This is getting so much more spicier, because Mumbai City FC, I think one thing we can take away from the 20 minutes is that MCFC, Aditya Chadda, they have been dominating right now. And Tikka really needs to gain back his composure, and now he's doing exactly the same, trying to build up an attack, and utilizing his wings as well with Theo Hernandez, looking for that cutback, delivers it, and there you go with Messi. He scores. Not the perfect timing, it was not green time, but when you have a card like the team of the year, Messi, well, TT, does it even matter? I don't think, क्योंकि मेसी के अगर आप शॉट्स ले लेते हैं एंड आपका ग्रीन भी नहीं हो रहा है, येलो तक भी पहुंच रहा है, तो भी आई थिंक वो आपको गोल देके जा सकता है। तो वही
कहीं ना कहीं दिखा, बट मुंबई सिटी एफसी जो एडवांटेज उनको मिला था पिछले मैच पे, वो कहीं ना कहीं इस कुछ क्षण के अंदर गवा चुके हैं। तो उनको एक और गोल दागना होगा अगर उनको अपने एडवांटेज को बना के रखना है तो। बट उसी के का फाउल कमिट करते हुए एंड क्लोज पास के लिए रोनाल्डिनियो जा जरूर चुके हैं राइट साइड से। हकीमी हकीमी टू रोनाल्डो, जॉर्जिनियो मौजूद है, पास आएगा कि नहीं? नहीं, खुद से ही शॉट लेने की कोशिश किया गया, बट वैन डे सार मौजूद थे, उनको बीट करना उतना इजी नहीं है। Yeah, of course not easy, but there you have it. Ooh, really committed in hard, has gotten Lucio up ahead, and again his defense has been split right open, and this is the pace of Mbappe I was talking about. But the keeper charge coming in, wanted to go for that ball roll in the last moment, or could have also opted for a chip shot, but has not happened, and now could get possibly punished. But again, those long legs of Virgil van Dijk saving the day. And we are back again. But as things stand, Chennaiyin FC, Karman Tikka, he's got that 1-0 lead over Aditya Chadda right now. तो पोजीशंस मुंबई सिटी एफसी के पास थोड़ा बहुत एडवांटेज है, थोड़ा बहुत ज़्यादा पोजीशन जरूर रख रहे हैं, लेकिन जो फिनिशिंग है वो नहीं हो पा रहा। कन्वर्जन रेट बहुत कम है, बट इस बार जॉर्जिनियो उसी टाइम पे एक बार फिर से वैन डाइक दोनों ही साइड से वैन डाइक सेव करते हुए बैक टू बैक, बट फाउल कमिट कर चुके हैं विद एम्बापे। बहुत कम दिखता है बाय द वे एम्बापे के साथ आप शूट ले रहे हो फ्री किक क्या, क्योंकि आपके पास जब रोनाल्डिनो मौजूद है। सो भाई एम्बापे एक कॉम्बिनेशन प्ले करने की कोशिश था, बट वो शॉट कनेक्ट नहीं हुआ सही से। Yeah, I mean, with the kind of cards, even I was kind of wondering why is he going with Mbappe. Yeah. But regardless, I think he had a different thought in mind. Went in for that combination play, like you said. But now Chennaiyin FC, they are on the attack once again. One thing we're also noticing that Aditya Chadda is, inside those set plays, he's bringing his centre backs ahead also, and was one of the reasons why Mbappe could just rush in through with that blistering pace, and things sadly did not end down well over there. But regardless, Karman Tikka is still gonna have that little happy face, at least for now. But we know in FIFA 23, one goal lead amounts to nothing at all. बिल्कुल, एंड ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन होता है, क्योंकि आप उस टाइम पे प्रॉपरली फुल्ली अटैक में जाओगे या फिर डिफेंस करोगे, वो समझना बहुत टफ हो जाता है। बट देखिए बेलिंगम, बेहतरीन इंटरसेप्शन, लेकिन उसी मोमेंट पे बॉल छीना गया कर्मन टिक्का की तरफ से। एक बार फिर से ज़ापी बमकिन की अगर बात किया जाए, वो डिफेंस तो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनको भी अटैक पे भी जाने की ज़रूरत है। आई थिंक बीच में जब हाफ टाइम आएगा उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजिक चेंजेस होता हुआ दिख सकता है। रोनाल्डो फिर से मौका बनता हुआ, गलती हुआ, शॉट भी लिया, लेकिन नहीं रहा ऑन टारगेट रहता तो वैन डाइक को भी बहुत ज़्यादा टफ सिनेरियोस फेस करने पड़ सकते थे। Yeah, I mean, one of those occasions where R9 misses, and did not have his composure over there, right? He was not set in for taking that shot, and it was just a hasty move made in there by Karman Tikka, which did not go through. But clearly, Karman Tikka has been relying heavily on those counter-attacks, and despite Zippy Pumpkin being so lethal in the first 15-20 minutes of that first half, could not get a goal. But he made a lot of efforts and tried whatever he possibly could. But then you could get to see Karman Tikka right in action, getting his fullback into play. That beautiful, cutback coming in from Theo Hernandez to Lionel Messi, and that was needed. And there you can see even the reverse elastico being made. And this is the moment where he could have, he had three options. Either he could have gone in for a ball roll, or he could have gone in for a chip shot, or he could have maybe gone for a power shot that has been lately introduced in FIFA 23. When you've got so much space, just L1, R1 and shoot. And that also sometimes gets through in those situations. But it is very difficult because, usually you kind of tend to advance your goalkeepers and the timing has to be pristine. But right now, not a lot of difference between the two sides. It's still that one goal that keeps them apart. What do you think is going to happen in the second half?
इट्स टू टफ कि हम लोग पहले से एक्सपेक्ट करें, बट आई थिंक इधर जो पॉज टाइम चल रहा है इसके अंदर शायद थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो ज़रूर किया जा रहा होगा। एंड स्पेशली अगर बात किया जाए मुंबई सिटी एससी की तरह से, उनके जो विथ है वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था, जिसको हम लोग अभी भी देख पा रहे हैं कि इधर इनके जो फुल बैक्स है वो काफ़ी ज़्यादा विथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बट इस बार के लिए जॉर्जिनियो एंड हकीमी, बट आई थिंक इधर जो है वो अटैक के टाइम पे भी सेट बैक के थ्रू रखा गया है, ताकि जब भी कोई बॉल आसपास आए तो वो डायरेक्टली जाके पुशिंग करे या फिर अटैक के टाइम पे होल्ड करे। बट थियो हर्नांडेज लेफ्ट विंग के ऊपर बनाते हुए ये बॉल को रोनाल्डिनियो मौजूद, रोनाल्डिनियो टू जॉर्जिनियो, देखिए कोशिश हो रहा है कि वो एक गैप ढूंढ पाए, एंड गैप अगर मिलेगा तो फॉर श्योर वो शूट तो इधर ले ही लेंगे। पास टू रोनाल्डो एंड फाइनली द कमबैक जिसके लिए वेट कर रहे थे पूरे मुंबई सिटी एफसी के जितने भी फैंस हैं सबके सब, बट जिपी पुम्किन फाइनली वो करके दिखा पाए। बट ऑन द हैंड चेन्नईयन एफसी, उनके फैंस के लिए बहुत ही अभी एक दुख का माहौल, क्योंकि वो जो लीड उनको मिला था उसके थ्रू ये मैच वो जीत सकते थे, बट अभी के लिए हो चुका है इक्वलाइज। सो फिक्सेस जो एक मौका था कि पूरे ओवरऑल सीरीज को ड्रॉ किया जाए, वो एक बार फिर से कहने के तवाद से। Yeah, of course. And you know, for all the viewers, if this gets ended as a draw, then Mumbai City FC, they're going to win the tie. And they will get those extra points on board, and not the kind of a start that the defending champions would be hoping for. And exactly, Karmantika wanting to save the day. But again, Aditya Chadda just being very vigilant with his defending, being very alert. He knows that he has been the better player in this game right now. He has kept, you know, the a larger number of possession stats on him. He was the one creating a lot of attacking chances, but was kind of, you know, not good with those finishes. But finally, he made an end to that. And right now, again, would look for that cutback. Goes on towards Ronaldinho, takes that shot. But Theo Hernandez making a very vital block interception over there. आई थिंक लास्ट प्लेयर थे इधर थियो हर्नांडेज, अगर वो कोई भी गलती करते या फिर डिफ्लेक्ट भी हो जाता उनसे तो भी ये एक गोल मिल सकता था। इस बार के लिए R9 के पास बॉल, नहीं करने वाले कर्मंटिका अगेन विद द गोल, एंड एक बार फिर से चेन्नई एफसी के सब फैंस के चेहरे पे वो हंसी लेके जरूर आएंगे, क्योंकि एडवांटेज मिल चुका है इस गेम के अंदर 2-1 के साथ। हालांकि अभी भी 30 मिनट के आसपास का गेम इन गेम टाइम जो है वो बाकी है, एंड फिक्सेस आई थिंक मुझे लग रहा है कि इधर थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस जरूर किए जा सकते हैं, एंड वो चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंबई सिटी एफसी के लिए। Yeah, a little bit of a glimpse of both the formations that we got to see. I think they are playing, you know, the meta formation that's really there, the 4-3-2-1, where you've got four, you know, your backs, and then you've got three on those midfields, and then two center forwards, and then one striker. I think that is the kind of approach. I think both these teams have gone for a little bit of an visual of their team, and now as things are. Look at that. You know, Chennaiyin FC, despite not having the best of position over there, but still they have that extra goal lead up. And if this keeps on going, then maybe Karmantika might just save the day for Chennaiyin FC, because right now, Mumbai City FC, they will have to find another opening. That previous goal that we saw, little bit of a misjudgment from Zippy Pumpkin, and boy oh boy, Ronaldo R9 with that blistering pace just made that run right from that right side, and did not hesitate in shooting. Had that perfect angle, did not have to do a lot of shenanigans over there. All he had to do was just score. And finally, we get to see a few changes being made. And as you can see, you know, Alfonso Davis comes in as a super sub. The TOTY honorable mention card is amazing. There he went in, Ronaldinho, a little bit of a step over, but it was well charged by Karmantika over there. बहुत बहुत शानदार कार्ड है अगर हम लोग बात करते हैं अल्फांसो डेविस की। सो वो तो देखने के लिए मिलेगा। एक बार देखिए थियो हर्नांडेज, द पेस, जिस तरीके से वो इधर रन निकाले थे काफी अच्छा, बट एक बार फिर से पीछे आएंगे क्योंकि वो पता था उधर से पासिंग ऑप्शन से ज्यादा नहीं मिलते। पहले से रोनाल्डो, लूसियो
बेहतरीन स्लाइडिंग टैकल जिसके थ्रू इस बार के लिए तो जो एक ह्यूज लीड बनता हुआ दिख सकता था चेन्नई एफसी की तरफ से, उसको रोका गया। Yeah, absolutely. I mean, had he changed, his foot over there, could have been a goal. A little bit of a player lock had come into play, and Mbappe being giving that pass away to it. Bellingham just trying to get in through a step over being formed, but Alphonso Davies just being alert and looking forward to it, managed to intercept, and now again we can see Aditya Chadha back on his attack. लेफ्ट विंग को एक बार फिर से, इसके पहले थियो हर्नांडेज थे, उनके साथ भी एंड इधर डेविस के साथ भी सेम तरीके से लेफ्ट विंग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बैक टू बैक। बट उस जगह पे हकीमी भी मौजूद है, पेस के बादशाहों के बीच में गिना जाता है हकीमी को भी। सो ऑब्वियसली इधर डिफेंस भी स्ट्रांग होगा, बट बेलिंगम की तरफ से छीना गया गेम एंड हकीमी राइट विंग। ओह माय गॉड, पास अगर पहुंच जाता इधर रोनाल्डो के पास तो हो सकता था कि 2 ऑल हो जाए, बट वो होने से फिलहाल के लिए तो रुक चुके हैं। एंड अभी मुझे तो लगता है कि चेन्नई एफसी कमेंटिका को यही ट्राई करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके बॉल को अपने पास रखे, पोजीशन मैटर्स एंड इस टाइम पे एंडिंग टाइम में तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। Of course, I mean, in those ending, dying moments, anything can possibly happen. And if you give Carmen Ticka space like that, but again, that keeper charge being so vital for Zippy Pumpkin, saving the day. And now he's on a counter attack, and Ronaldinho trying just to maybe edge in, beat that right back over there. But Alphonso Davies just kicks the ball out of play, and now the final 10 minutes remain. You can see this is where Mumbai City FC have to make a few changes, get some fresh legs in, because now with the kind of plays that they've been making, the players are getting really tired. So few fresh legs, well, that could make a whole world of difference, TT. फॉर श्योर एंड लेट्स सी लाइक चेंजेस कौन सी तरफ होंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर फुल अटैकिंग साइड पे जो कहने की एनर्जीज है वो डाउन होता हुआ ज़रूर दिखा था। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एक प्लेयर जो है वो विंग को चेंज कर सकता है, तो विंग पे कोई एक न्यू प्लेयर हम लोगों को ऐड होता हुआ दिख सकता है फ्रॉम द साइड ऑफ मुंबई सिटी एफसी। पार्ट मुंबई सिटी एफसी के जो डिफेंस है उसको शायद मुझे लगता है कि तोड़ने के लिए जो उनका विथ है वो थोड़ा अगर और कम रहता है तो ज्यादा बेटर हो सकता था, जिसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इधर कमर टिक्का बार बार, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीच से जो पासेस है वो निकाला जा रहा है, फिर रन निकाल रहे हैं वो बार बार सेंट्रल साइड से ही निकलता हुआ दिख रहा है, और अगर विथ कम रहता तो शायद मौका नहीं मिलता। तो ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर देखिए एम्बापे, oh my God, KDB on the ground. Oh, there you even have Ibrahimovic being brought up, the Centurion one, a beautiful long pass. Oh, all he had to do with that cross was just try to go for that header. In fact, did though, but not in the right direction, and could possibly get punished as Haaland, he's making a run with Pele. Has to look for a few more passes. Bellingham trying to search. I think maybe it was Cafu in that moment. So a lot of interesting substitutions being made. The Centurions, Ibrahimovic, you've got a lot of potential, now with KDB also being brought up, things could have changed, can change actually. You can make those long passes right now and you can go in for those headers, but KDB trying to take that shot, but was measly offside. Yeah, Mbappe was the offside position पे थे. That's why the मौका कहीं न कहीं गवाते हुए, but I think this will be the last chance from मुंबई सिटी एफसी. एंड देखिए मुंबई सिटी एफसी इधर बॉल इस बार के लिए तो खो चुके हैं, इस बार शायद ही उनको मौका मिले. टाइम इधर व्यतीत किया जा रहा है चेन्नई एफसी की तरफ से, एंड यही चीज करना भी चाहिए. आखिरी 1 मिनट एंड होता हुआ फुल टाइम मैच हुआ एंड. तो पहला गेम दोनों ग्रैंड फाइनलिस्ट के बीच में जो पिछले सीजन में फाइनल्स खेले थे, बहुत इवन स्टीवन कम हुआ इधर फिक्सेस. Yeah, at least, Carmen Ticka, he keeps them walking, still in contention. But what a beautiful debut for, Mumbai City FC. And regardless of the outcome as things stand, it is going to be a draw in this tie. Despite Carmen Ticka getting that individual victory over here. But it was a beautiful matchup nonetheless, right? I felt, the quality of goals that had come in, and Carmen Ticka really got those
beautiful chances, those player locks that he made. Look at this. This is a perfect example. Locked on towards R9, went in with that pass, exactly got it where he wanted. And as things are, the first game was a draw between Naveen and Saki. The second game was where Mumbai City FC managed to edge it against Chennaiyin FC. But in the third one, Karman Tikka saving the home team with that win. And now the points will be shared by both the teams. And that was all about, match number one. But let's not forget about the action that waits for us in match number two. Bengaluru FC going up against Northeast United FC. Game number one, we have got Charanjot. And of course, going up against, his arch nemesis, his teammate in real life, but you know the history of these two players, right? Saranjan. Now, this has to be one of the main event matchups that you can say, right? This is it. Every FIFA fan looks up for this matchup. Charanjot against Saranj. But of course, we also have their teammates coming in. They'll also be there in a while. But gives us enough time to talk about what just happened in the first game that we have, Chennaiyin FC versus Mumbai City FC, that ended in a draw, TT. But what were your final takeaway from that individual match that we got to see, the game number 3 exactly? आई थिंक गेम नंबर 3 के अंदर मुंबई सिटी एफसी की तरफ से मेनली अगर डिफेंसिव पोजीशन की बात किया जाए तो उस पे हम लोग को विथ, जैसे कि हम लोग इन गेम भी बात कर रहे थे कि डिफेंसिव पे विथ जो है वो बहुत ज़्यादा दिया जा रहा था. एंड स्पेशली इधर वैन डाइक जो है वो उतने खास पोजीशन पे नहीं थे. दैट्स वाई मुझे लगता है कि बीच में थोड़े बहुत जो चांसेस बन रहे थे. एंड ऑन द अदर हैंड कर्मन टिक्का का जो 1-2 था वो बहुत ज़्यादा शानदार, कर्मन टिक्का के नाम पे भी टिक्का है एंड वो टिकी टाका भी बहुत अच्छे से कर रहे थे. तो सब मिला के अगर देखा जाए तो वही दो चीज़ों की वजह से शायद इधर मुंबई सिटी एफसी के जो डिफेंस है वो उतना कुछ खास तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया. एंड दैट्स व्हाई स्कोर लाइन वाइज 2-1. Yeah, absolutely. And right now, as things stand, things did end in the draw. But right now, ladies and gentlemen, we are finally done with the first matchup of the evening. We are going to be heading for a short little break because right after, we will be back with match number 2.